the Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the Unified Pension Scheme, which aims to provide assured pension, family pension and assured minimum pension to government employees. Meanwhile, the state government will also be given the option to opt for Unified Pension Scheme if state government opts for UPS, which is the Unified Pension Scheme. Then the number of beneficiaries will be around 90 lakh. According to the government, the expenditure for arrears will be rupees 800 crore. The annual cost increase will be around rupees 6,250 crore in the first year. The scheme will be effective from April 1, 2025. Central government employees will be given the option of choosing between National Pension Scheme and the UPS, which is the Unified Pension Scheme. Existing central government National Pension Scheme subscribers will also be given the option to switch to Unified Pension Scheme. We have with us Manohar Kesri. Manohar, what can you tell us about the fact that now the Unified Pension Scheme has been given a cabinet nod, and what is the key difference between the National Pension Scheme and Unified Pension Scheme? देखिए, बिल्कुल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में मंजूरी दी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के, और ये स्कीम जो भी अपकमिंग असेंबली इलेक्शन है, 2 राज्यों में असेंबली इलेक्शन डिक्लेयर भी कर दिया गया, हरियाणा और यूटी जम्मू कश्मीर में, ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। खास करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम की अगर हम बात करें तो इस स्कीम में जो डिमांड सेंट्रल एम्प्लॉइज का था, जो लगातार विरोध प्रदर्शन करता आ रहा था एनपीएस के खिलाफ और ओपीएस को लागू करने की बात कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में ये काफी उनके लिए फायदेमंद है। हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तमाम यूनियन के संगठनों के साथ मुलाकात की और तमाम संगठन के लोगों ने इस यूपीएस को सपोर्ट भी किया है और वेलकम भी किया है। जहां तक इस यूपीएस का सवाल है कि आखिरकार यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या शामिल किया गया है, किन किन पॉइंट्स को शामिल किया गया है, तो पहला है 50% जो आफ्टर सुपर एनुएशन के बाद 50% पेंशन दिया जाएगा। उसमें भी 2 कंडीशन है कि 10 इयर्स तक सर्विस हो, और अगर 25 इयर्स तक सर्विस हो, 25 इयर्स तक के सर्विस को 50% दिया जाएगा। मिनिमम जो पेंशन है, क्योंकि अभी एनपीएस में दिक्कत आ रही थी कि जो पेंशन राशि थी वो 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे बन रही थी, जिससे लोग काफी नाराज थे, और अब इसमें 50% ऑफ मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे फैमिली एश्योर्ड स्कीम, क्योंकि इसमें 5 पॉइंट हैं जिनमें से एश्योर्ड स्कीम है, उसके बाद से फैमिली एश्योर्ड स्कीम है। फैमिली एश्योर्ड स्कीम में अब कोई भी अगर डिसीज्ड होता है तो उनकी फैमिली मीन्स उसके स्पाउस को उसी वक्त जो है 60% ऑफ टोटल जो पेंशन बनेगा उसका 60% उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डीए को लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी थी, क्योंकि एनपीएस में 6 महीने के बाद डीए नहीं लगता था, तो ऐसी स्थिति में डीए को भी शामिल किया गया है। और इसमें कहा गया है कि ये जिस तरह से इन्फ्लेशन रहेगा उसके अनुसार से बाजार पे अगर दिए जिस तरह से सरकार बढ़ाती है उसके आधार पर उनका पेंशन भी बढ़ेगा। तो इस तरह से कई पॉइंट्स हैं जिनमें सारे इनके जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व कर दिया गया है। जी, all right, thank you. Manohar, please stay with us. We are being joined by Madhav Nalapat. He is an editorial director of TSG. Madhav, what can you tell us now? The UPS has been given a cabinet nod, and this move comes ahead of the assembly polls in Jharkhand, Haryana, Jammu and Kashmir. And is there a political motive behind this just ahead of elections? Say that when something good is done by the government, let's not worry about the motive. Whatever the motive, it's something that's good that has been done.
and the report is quite right. This scheme, as well as an effort to reduce GST taxes and to make it less regressive, and a scheme to reduce income tax, all this should have been done, very frankly, before the 2024 Lok Sabha election, but better late than never. I am very happy that this has been done for a simple reason, that tens and tens of millions of hard-working government servants work their whole lives in a sincere and honest way, and they serve the public, and they deserve a good deal. This is giving them a good deal, and I'd like to congratulate Prime Minister Modi and Finance Minister Nirmala Sitharaman for this move. I am delighted by this, and I hope that will be followed up by other moves, including on GST and on income tax. All that we are talking about is justice. Justice for the honest taxpayer. Justice for the honest government employee. And this is now justice for the honest government employee who spends his entire life working in the public interest and deserves a decent pension when he or she retires. So I congratulate Prime Minister Modi, I congratulate Finance Minister Nirmala Sitharaman on this move, and I am very, very happy, and I hope that other moves are underway on GST and income tax as well, because it is high time honest people were given their due in India. And honest people, frankly, all these taxes are basically striking them. Those who are dishonest, those who have black money, they have no problem. I mean, I said long ago, we had a finance minister in the Congress government, and when somebody imposed Indira Gandhi, 0.25% rate of income tax on incomes not really very high, that yes, why should he care? The fact is, he's got black money. Black money people pay zero taxes. And this is the point. The honest taxpayer, the honest employee is finally getting his or her due. And I'm delighted by it. I congratulate once again Prime Minister Modi and Finance Minister Sitharaman on this very necessary move for justice for the honest taxpayer, justice for the honest government employee. Thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.